ओके सो गाइज, कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड. तो लेट्स एवरीवन ज्वाइन एंड विल स्टार्ट दिस डिस्कशन. लेट्स वेट फॉर अनदर 5 minutes. एंड अगेन जो आज लाइव का सेटअप है वो थोड़ा डिफरेंट है. कुछ टाइम से मेरा पीसी सर्विस के लिए गया हुआ है. सर्विस इन टर्म्स ऑफ रिपेयरिंग के लिए गया हुआ है. डिस्प्ले चेंज करना पड़ेगा. सो फ्रॉम लास्ट 2 lives we are trying different things. ठीक है, different way of getting live. So just do let me know, is my audio and video is clear to you all or not? Hi, why always doing Hindi language? So actually, Shravan, I started this channel in Hindi language, and what happened after that, I continued in the same way. I never thought about the languages Hindi and English, but after that I continued in the same way. But whenever I see if the person is speaking in English, so I continue with the same. If he or she is speaking in Hindi, I'll continue with the same. सो ज्योति इज आस्किंग, सर आपका जो गाइड कोर्स रहता है गाइड करते हो वहाँ पे आप इंटरव्यू भी प्रोवाइड करते हो? बिकॉज ज्योति एज सच प्रॉमिस तो नहीं करते इंटरव्यू प्रोवाइड करते, बट इफ़ यू आर गेटिंग एनी अपॉर्चुनिटीज़ देन फॉर श्योर. Okay. I think initially when we start this live discussion, very less people get connected for the initial few minutes. Anjali, good evening Anjali. Shravan is asking, bro, do TLF videos. Okay, we'll try it. ज्योति, सर इंटरव्यू नहीं मिल रहा सर, क्या करें? और आपका एक स्टूडेंट को भी अभी मिला ना सेल्स प्रोग्रामर वडोदरा में, तो कितने दिन के अंदर मिला उनको? आई थिंक आप केतुल की बात कर रहे हो ज्योति. ही गॉट इट विद इन, आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर, बट मे बी 5 months, 5 महीने हो सकते हैं फॉर श्योर. Okay. Hey Rahul.
So guys, I'm able to see very less comment. Why this is happening? Why very less people are there in this live discussion? Let me try refreshing it. And guys, quickly confirm me, is my audio and video is clear to all? Okay. So Jyoti, the question you are asking, already I made a lot of videos. If you go and check, see, finding a job, okay, and the duration and the learning, everything is a process and it gonna take some time. You need to be very clear in the beginning कि कितना time लगेगा किस process में. The problem is that if you don't know कि process क्या है, कितना time लगेगा, अगर उस ड्यूरेशन के अंदर मुझे जॉब नहीं मिलती तो मुझे क्या एक्शंस लेने चाहिए. यू शुड बी वेरी क्लियर विद द थिंग्स. किसी चीज़ को सीखना और उस पर जॉब लेना, आप सिर्फ दो ही चीज़ सोचते हो, दैट वन इज़ लर्निंग, अनदर इज़ गेटिंग अ जॉब. बट इन द लर्निंग प्रोसेस अल्टीमेटली बहुत सारी चीज़ें होती हैं. इन द गेटिंग इंटरव्यूज़ और क्रैकिंग इंटरव्यूज़ बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हर चीज़ का एक ड्यूरेशन होता है, हर चीज़ में कितना टाइम लगेगा. ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस टेक्स इट्स ऑन टाइम. एंड उस केस में भी आपको फिगर आउट करना रहता है कि मैंने एक टाइमलाइन डिसाइड की है या एक्सटेंडेड टाइमलाइन है, उसके अंदर मुझे नहीं मिलता, व्हाट एक्शंस आई हैव टू टेक. सो आई बिलीव यू शुड बी वेरी क्लियर विद दिस थिंग्स. Kati is asking how much will be accept salary for 5 years experience person in clinical SaaS. 5 years as in clinical SaaS programmer, so you can assume between easily 20 to 30 between. Which website is best for job searching? LinkedIn. सर हाँ, मुझे समझ रही हैं प्रोसेस, लेकिन एक पेशेंस भी नहीं रहती. सर मैंने बोलने का मतलब है कि इंटरव्यू में बार बार बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो करेक्ट ही करेंगे, लेकिन बिल्कुल ही नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे. ज्योति देखो, एक होता है प्रॉब्लम, एक होता है सॉल्यूशन, एक होता है फिगरिंग आउट. हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, लेट्स सपोज वी स्टार्टेड ट्रेनिंग फॉर अ रोल. हमने डिसाइड किया कि मुझे क्लिनिकल साइंस पे जॉब चाहिए या किसी चीज़ पे. वी स्टार्टेड द ट्रेनिंग एंड गेम इज़ इंटरव्यू एंड गेटिंग अ जॉब. हम सीधा एंड गेम का ही सोचते हैं, गेटिंग इंटरव्यूज़ एंड गेटिंग द जॉब. गेटिंग इंटरव्यूज़ इज़ लाइक इफ़ यू आर गेटिंग 4, 5, 6 इंटरव्यू, इट मीन्स फॉर श्योर यू कैन गेट द जॉब. क्योंकि 2-4 इंटरव्यू देने के बाद तो आप अपने आप में बहुत बेटर होते जाते हो. तो अगर एंड चीज़ इतनी आसान होती ज्योति, तो फिर दुनिया आसान नहीं हो जाती. एंड गोल अगर इतनी आसानी से मिल जाता, तो इंटरव्यूज़ इतनी आसानी से मिल जाए और क्रैक भी हो जाए तो. सो इट्स नॉट अबाउट डिफ़िकल्ट और ईजी, उसके लिए एक प्रोसेस होता है, उसके लिए टाइम लगता है. एंड एक सिंपल सा फैक्ट है ज्योति, यू नीड टू आस्क योर सेल्फ दैट अगर बहुत सारे लोग हैं किसी चीज़ में कम्पिटिटिव, तो आपको ही क्यों मिले. व्हाट इज़ समथिंग बेटर यू आर डूइंग. आप बेटर क्या कर रहे हो. लेट्स सपोज मैं सोचूं मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, लेट्स सपोज कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना अच्छा कर रहा हूँ,
मेरे वीडियोस पे व्यू क्यों नहीं आ रहे, या इस लाइव में सिर्फ 8 लोग क्यों हैं, और मैं ऐसा सोच के मैं वीडियोस बनाना बंद कर दूँ या वीडियोस बनाना कम कर दूँ या मैं एफर्ट ना डालूँ, ठीक है, तो वो गलत होगा, राइट। फिर भी मैं मैं आता हूँ, लाइव भी आने का ट्राई करता हूँ, वीडियोस भी रेगुलरली बनाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। देखोगे तो कुछ वीडियोस काफ़ी अच्छे होते हैं एंड काफ़ी अच्छा कंटेंट होता है, बट सो ईच एंड एवरी टाइम अगर हर व्यक्ति रिज़ल्ट के बारे में सोचने लगा, वो सोचने लगा कि अरे पेशेंस, ये सब चीज़ें, थिंग्स विल गेट डिफ़िकल्ट। यू नीड टू क्रिएट अ रोड मैप कि भाई इतने से इतना टाइम मैंने खुद को दिया है, अगर इस चीज़ में ये चीज़ नहीं हुई तो मैं क्या करूँगी, नहीं तो मैं क्या करूँगा, एंड क्या प्रोसेस है, कैसे मैं बेटर हूँ, अगर मुझे नहीं मिल रहा तो क्या करना पड़ेगा। सो यू नीड टू टेक सम स्टेप्स, गेट आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस। अपने क्वेश्चंस का आंसर लो किसी से, क्या गलत कर रहे हो या कहाँ बेटर कर सकते हो। इट्स नॉट अबाउट सेल्फ, खुद को ही ऐसा सोचते रहना कि नहीं हो रहा, पेशेंस रखा है, नहीं। आप कहाँ, अगर आपको अप्लाइंग पार्ट में अगर आपको लग रहा है दैट यू आर वेरी गुड एट द टेक्निकल पार्ट बट द अप्लाइंग पार्ट इज़ नॉट गोइंग वेल फॉर यू, यू आर नॉट गेटिंग इंटरव्यूज, connect with someone, get an idea, okay, get the clarity. What is something best you can do to get the interview? Have you tried your best? Are you trying your best? Are you sure you are trying your best? So yeah, you should be very clear with the things. Rahul sir, bachelor's in arts says बैचलर इन आर्ट्स के लिए सैस, सी आज के टाइम पे तो किसी को भी अगर टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, ही कैन ट्राई फॉर दैट पर्टिकुलर रोल, अभी बैरियर नहीं रहा। बट बैचलर्स एंड आर्ट्स के बाद बेटर क्या रहेगा, सैस रहेगा, वो मैं आपको एग्जैक्टली सजेस्ट नहीं कर सकता, बट आई फील कि बैचलर्स और बैचलर ऑफ आर्ट्स के बाद आप चेक करो कि जो लोग हैं या क्या रोल्स है, सिंपली गूगल करो बेस्ट जॉब्स आफ्टर बैचलर ऑफ आर्ट और हाईएस्ट पेइंग जॉब्स। आपको शायद 100 गलत न्यूज़ मिलेगी, बट शायद आपको 2-3 ऐसी न्यूज़ मिल जाएगी जो एक्यूरेट होगी और जो सही होगी। सो स्टार्ट लुकिंग फॉर इट। Kati is asking, sir, basically I am from MSc chemistry background. In interviews notification eligible criteria, there is no mention MSc chemistry eligible for clinical science. Kati, of course you are eligible. You have done masters, right? You are eligible for 90% of roles, 95% of roles. Saraswati, see, asking me that in which months opening are there, that not gonna work. See, why? Because I'll try to create a video. Even we have discussed कि किस months में openings रहती है. I'll try to create a video. But even I'm aware about the opening, I cannot share directly on this YouTube platform. क्योंकि अगर मेरे किसी interview, if some of my students are getting interviews in any company, if I'm telling that on YouTube, it will become competitive, right? A lot of people will apply in the same company. But still, I'll create a video on that, in which months mostly interviews are there, okay, which are the months in a year, on that particular month interviews will be high or interviews will be present, okay, what are the intervals between interviews companies are taking, like every 3 months, every 6 months. I'll try to create a journal video. Kati, and in recent more hiring is done for pharmacy student and computer science background students, so I'm eligible for it. Kati, of course, I'm damn sure you are 100% eligible. You know, any student who don't have the clarity, so that becomes questions and he and she is always in doubt. Recently, some of my student told me, pharmacy student or someone from internet asked me that for pharmacy student they are not giving the chance. See, in the comment you are telling they are mostly hiring from pharmacy background. So people with not having full clarity, they have those doubts. But don't worry, pharmacy and your background, chemistry, you are totally eligible.
ज्योति माया रथ, मैं भी आपके पास सीख रही अभी, मुझे बस आपसे अब थोड़ा इंटरव्यू मेरी भाई, इज इट? सर मेरा भाई आपके पास सीख रहा है अभी सर, मुझे बस ट्रू प्रोवाइड में कुछ हेल्प करे तो बहुत अच्छा होगा। आपके पास जो फ्रेशर है आज एक प्रोडकास्ट रिकॉर्ड होने वाला है, रिसेंटली जो हायरिंग हुई थी राइट क्लियंता में ज्योति। सो टुडे ये जो लाइव सेशन ख़त्म होगा उसके बाद हम वही करेंगे रिकॉर्ड, मतलब 9:30 को वो स्टार्ट होगा केतुल के साथ डिस्कशन, बट वो मोस्ट प्रॉब्ली कल या मंडे को अपलोड होगा, ठीक है, उनकी जर्नी लर्निंग से लेके प्लेसमेंट तक। बाय द वे ज्योति, व्हाट्स योर ब्रदर नेम? Obed, so lots of people said financial months is also over, started April, and also I heard April, May, June, July. Is it true? Is it true? I can't see any. See Obed, that's why I always used to say that you cannot map the market and you cannot fix it that when the hiring will be there. In my case, recently in Jan, Feb, and March, I have seen a lot of hirings, especially for my student. So we cannot map it, or we cannot exactly know that when the hiring gonna be. But yeah, as I said, I'll make some video that what are the intervals in which months mostly company do hire, what is the pattern for fresher interviews. The only best way is like to check on the company website, okay, to connect to people, different companies, employees, getting an idea. These are the best way, checking on their website and checking with their employees. Sir, is clinical sciences better or learning AI ML is better as a fresher? Kati, you should be very clear that what you want to become. If you want a job in a CRO, you want to analyze clinical data, then for sure clinical science. And in the clinical science also there is a scope of AI and ML. I think because see, clinical SaaS is a role, clinical is an industry and SaaS is a software, and actually you are doing data analysis using SaaS software. So in future you can, I think in future AI ML will come in clinical SaaS as well after 5-10 years. So both will be not different. Data analysis, like you are already doing data analysis on SaaS software. Data analysis, data engineering, AI ML, those are like the different chapters of the same book, you can say. Okay. Sure Rahul, most probably till Monday it will be uploaded. I'll try for Sunday, कल ही upload हो जाए. बट एक्चुअली क्या होता है, जो एडिटर होते हैं संडे को, हर किसी को संडे को छुट्टी चाहिए होती है राइट. सो वो वीडियो रिकॉर्ड तो हो जाएगी आज ही, बट मोस्ट प्रॉब्ली मंडे को एडिट होगी और मंडे इवनिंग को अपलोड हो जाएगी. हाँ, लेकिन अगर मुझे टाइम मिलता है फैम एडिटिंग, सो कल भी कर सकते हैं. Kati is asking for clinical science training, which will be better, online or offline class? See, Kati, now things are changing in a very fast way. Earlier there was a sense कि offline better होता है, और but now the things got changed. अभी online भी better होता है और offline भी better होता है. And I always believe it's all about the trainer.
from where you are taking the training and about the trainer. If he is a good person, if he is having good knowledge, and if he or she is supportive, so then for sure आप ऑनलाइन लो या ऑफलाइन लो, आपको ट्रेनिंग अच्छी मिलेगी. बट अगर ट्रेनर अच्छे नहीं हैं, सपोर्टिव नहीं हैं एंड गाइड नहीं करते, तो इट डजेंट मैटर आप उनसे ऑनलाइन लो या ऑफलाइन लो, दोनों ही केस में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा. सो आई बिलीव इट्स मोर अबाउट द ट्रेनर, आप किन से ट्रेनिंग ले रहे हो, rather than comparing online versus offline. I hope you got the clarity. Kati, global is not mandatory, but yeah, it is something good to have. It will increase your chances up to 10%. Okay. Okay guys, so apart from the technical things, let's talk about something very general. See, a lot of you might be in this journey of job hunting or making your career better, choosing a role. So the very first thing you will be doing, choosing a good career. The very second thing you'll be doing, learning, either online, offline, or from anywhere. The very third thing you'll be doing, that is apply for interview and getting the job. Now it seems very easy that 1, 2, 3, okay, that तीन चीज़ें की और हो गया, नहीं. But behind the scene a lot of psychologies are there, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, need to understand that. एक पूरा process होता है. You know, a good career actually can change your generation and can change your life. It can change the way you think, or you think about the world, you think about yourself, you think about money, you think about each and everything. So the process is neither easy nor difficult. ये बहुत ज़्यादा difficult नहीं है, easy भी नहीं है, ठीक है. But the fact is, the people, what I have seen a common pattern, the people who are positive, जिनका approach positive रहता है, the people who are consistent, the very first thing, that is consistency. The very second thing, the positive. The very third thing, that is patience. Any good thing you are doing in life, it is like that gonna test your patient in a very hard way. Okay, so if you are having positive approach, if you are putting your efforts, okay, in learning or whatever process that is coming in front of you, if you are consistent as well, if you are maintaining your patience as well, then you're gonna win the game. Or the only thing about the patience, a lot of people have this issue, they don't figure out. Let's suppose if you are looking for a job, okay, in clinical science, let's suppose you have planned for yourself within 7 months or 8 months I'll get a job. So you should always have a plan B as well. Let's suppose within 6 months or 7 months, if I'm not getting the job, I should immediately join X role or Y role on the basis of my education. I don't need to wait for a year. Okay, maybe you can get a job after few months, but you should not wait too much. What my default suggestion is, during the training time, okay, if you have time, give time till max 6-7 months, or immediately after completing the training, get a job. Get a job on any role that is based on your education, and meanwhile apply for clinical SAS, continuously apply for clinical SAS, and once you crack this clinical SAS, join this. So you should not sit idle. A lot of people do this mistake,
they sit idle, they don't have a backup plan, they even like didn't planned for the time duration कि कितना मुझे time लगेगा, or like how long I can wait, it is 7 months or 8 months, and what is the next plan. So if you wait too much, you get pressurized. अगर आप बहुत ज़्यादा वेट करते हो, प्रेशराइज हो जाते हो. If you get a XYZ job and meanwhile you are applying for this job, and if you are getting interviews, if you are cracking it, that process gonna be smooth. So again, whatever suggestions I am giving, you need to opt in your own way. You need to think about it, what things is that gonna benefit you, or what things that will not benefit you. You'll have different criteria. Whatever I am saying here, it cannot be accurate and exactly for you. You need to take it the positive, or the positive which is according to your criteria. Okay, you feel this gonna be working for me, or this gonna work for me. Okay, sir, there is any book for clinical SAS to refer? Kati, for sure we can create a new video for this. We'll refer some books. Prashad Bhosle, sir, clinical SAS or CDM, which domain is good? Of course clinical SAS, and if you prepare for clinical SAS, already you are eligible for CDM as well. So अगर कोई क्लिनिकल SAS की तैयारी करता है, वो CDM की जॉब भी ईजिली ले सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वो एलिजिबल रहता है, उसके पास सफिशेंट नॉलेज रहता है. Okay, so guys, if you have more questions, we can continue, or we can wind up this live discussion in another 5 or 10 minutes. Okay. So guys, like okay, Swati is asking, hello sir, can I switch field? I have done MSc zoology, 3 years of experience in teaching, still confused in career, need your guidance. Yes Swati, you can. See, what I believe guys, if you are doing some X job, okay, and you feel there is an Y opportunity for you, in your case Swati, you are eligible, and if you think, or if you see there is a better opportunity for you, you should always try, right? What's wrong? Even in the worst case, your default life will be going on, right? Let's suppose you are doing an X job, a teaching job, and if you try for it something better, like let's suppose like clinical SAS, and if you are getting into it, so of course it is very good. It is one of the highest paying job in CRO. So Swati, for this I have created a video, clinical SAS roadmap. I have created 2-3 videos. You can go and watch the entire video. You can simply write clinical SAS roadmap and my channel name, Mr. Seeker. You'll get 3-4 videos. And if I have to tell you how much time it's gonna take, 4 months around. Okay, so guys, it seems no more questions. So I think I was not coming live from last few sessions, and because of that
the algorithm is not suggesting my videos to those people. राहुल इज टेलिंग सर आपके कम व्यूवर्स देख के डीमोटिवेट मत होइए बिकॉज गुड थिंग्स टेक टाइम और हमें सी राहुल मैं इस चीज़ पे कॉन्सेप्ट पे बिलीव ही नहीं करता कि मतलब मुझे किसी चीज़ से रिज़ल्ट मिले अब मतलब हर किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए बट करियर के मामले में तो या वी नीड रिज़ल्ट बट दिस थिंग ये जो मैं यूट्यूब कर रहा हूँ सो दिस इज़ नॉट फॉर व्यूज़ ऑफ कोर्स आई विल डू समथिंग टू मतलब मैं इस चीज़ पे काम ज़रूर करूँगा कि हाँ कि अगर व्यूज़ कम आ रहे हैं नेचुरली सो क्या हम बेटर कंटेंट बना सकते हैं इज़ समथिंग दैट बट आई डोंट गेट डीमोटिवेटेड फ्रॉम दिस ठीक है इससे कुछ डीमोटिवेशन नहीं होता है आई एम डूइंग दिस लाइव डिस्कशन और मेकिंग वीडियोज़ बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच आई लव टू डू नो वन टोल्ड मी टू डू दिस तो जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आपको पसंद है तो वो चीज़ नेचुरली अच्छी रहती है बट या समटाइम्स वाइल डूइंग दिस लाइव डिस्कशंस आई फील दैट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर रिपीटेबल बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेबल होते हैं एंड द सेम आई वॉज डिस्कसिंग विथ माई टीम दैट कैन वी मेक सम एजेंडा फॉर लाइव डिस्कशन क्या हम कोई एजेंडा कर सकते हैं दैट कि हर लाइव में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे बिकॉज अगर मैं कोई एजेंडा नहीं रख रहा तो अगर मैं आपके क्वेश्चंस ले रहा हूँ तो काफ़ी क्वेश्चंस डिफ़ॉल्ट होते हैं कुछ क्वेश्चंस तो फ्रेश होते हैं बट कुछ क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेबल होते हैं सो आई वॉज थिंकिंग आई वॉज डिस्कसिंग विथ माई टीम कि लाइव में ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे कि वो हेल्पफुल हो इंटरेक्टिव हो और कुछ मिनिमम लेवल की नॉलेज लाइव में व्यूअर्स को मिले ही मिले वो वेस्ट ना जाए उनके लिए स्वाति सर वन मोर क्वेश्चन कैन आई डू दिस कोर्स विद कंटिन्यू ऑफ कोर्स यू डोंट नीड टू लीव जॉब in this era in 2023 and 24 or 25 in the coming era you don't need to leave X thing to do Y thing okay and you don't need to leave your like current job learn the skill clinical SaaS online and once you get a job in what we say once you get a job in this role then you leave your current job okay so chalo guys finally I feel there is no more questions और questions नहीं है so we can wind up this session we can end this live discussion तो मिलते हैं गाइस अगले लाइव डिस्कशन में एंड रिसेंटली मैं एक प्रोडकास्ट अपलोड करने वाला हूँ मोस्ट प्रॉब्ली मंडे तक मंडे इवनिंग 7 या 8 PM तक मोस्ट प्रॉब्ली 7 PM फॉर श्योर विथ माई recent student who got selected on clinical SaaS role so that's all for today guys मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन